Hello, student. Very good afternoon to all of you. I'm Prerana. Welcome you all to Vedang NEET. So, केमती अच्छे समझते and how is your preparations going on? Okay. तो जेमती कि तमने कहितिलो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कथा तार वीडियो ऑलरेडी चैनल रे अपलोड अछि तमे माने जाई कि परे क्लासेस रे चेक कर दबो फ्री टाइम रे जाई कि जते चेक कर दबो सेकंड थिंग हला जदि चैप्टर ऊपर किछि डाउट आसुछि तमे कमेंट सेक्शन रे मते लिखि कि पचारि परिबो नेक्स्ट थिंग होची ता ऊपर एमसीक्यूज ता ऊपर ऑलरेडी हमें एमसीक्यूज बहुत सारा कहि सारलु करि सारिछु प्रैक्टिस टेस्ट तार भी वीडियोज ऑलरेडी चैनल रे अपडेटेड अछि आउ जदि तार रिलेटेड किछि पीडीएफ पाइबार अछि तुमको तो तमे जदि एबे पर्यंत वेदांग जेई नीट चैनल को सब्सक्राइब करिनियो आउ जदि तमनको पीडीएफ पाइबार अछि तमे जाई कि टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जाओ तळे तमरो लिंक दिया हे जे तळे लिंक रे जाई कि क्लिक करिकि टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जाओ आउ व्हाट्सएप चैनल रो स्क्रीनशॉट्स भी मु तुमको आगु देइछि सेठी भी तमे जाई कि तमर जदि किछि भी कंप्लेन अछि तमे कंप्लेन रेज करि परिबो ओके आउ जदि किछि इशू भी अछि पढ़ा रिलेटेड को चैप्टर रिलेटेड डाउट अछि ताहले भी तमे सेठी जाई कि मते जणे परिबो मु तम क्वेरी रो सबुडा आंसर करबी ओके तो जेमते कि आमे एबे चली थिले बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करथिले बायोटेक्नोलॉजी सीरीज रे आमे ऑलरेडी करि सारिछु गोटे गोटे पार्ट हमरो जाईछि आज तार नेक्स्ट पार्ट तो जो माने पीडीएफ सहित अपडेटेड ना हो एबे कहूची कहिथिली एबे भी कहूची जाई कि टेलीग्राम चैनल को जॉइन करो देखि पड़थुबो समस्ते एपटे तमरो टेलीग्राम चैनल अछि एपटे तमरो व्हाट्सएप ग्रुप अछि तमे जाई कि स्कैन करिवो दुईटा सारा चैनल को जॉइन करो जदि किछि क्वेरी अछि जदि किछि कंप्लेन अछि तमे एठी मेसेज द्वारा जॉइन परिबो ओके ठीक अछि तो स्टार्ट करिवो आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन को नै कि स्टार्ट करिवा फर्स्ट क्वेश्चन को नै कि हला फर्स्ट क्वेश्चन को आसो agarose is extracted from agarose is extracted from E. coli S typhimurium yeast or seaweed कथा पचारुची कोउटा हबो agarose जेल टा agarose कोठे यूज होतला मने पडुची agarose जेल agarose कोन थिला agarose इज ए जेल agarose जेल कोठी यूज होतला मने पडुची इटी थिला सबु डीएनए वेल को प्रोसेस कथा कहूची तमे मते कहिबो एटा थिला agarose जेल मीडियम या भीतर सब कौन होतुला डीएनए पार्टिकल इंसर्ट करा होतला कौन करा होतला डीएनए पार्टिकल इंसर्ट करा होतला ओके तो एटा कहारो प्रोसेस कथा मु कहूची कहारो प्रोसेस एटा बोली मु कहूची ए जो डायग्राम तमे देखुछो एटी कोन सब डीएनए सेगमेंट उडा थिले आउ से माने मूव होउथले गोटे डायरेक्शन रो आउटे माने ऊपर तळ कैथोड एनोड लागि थिला एटा कोन बोली एटा कहारो प्रोसेस बोली मु पचारुची तुमको कहारो प्रोसेस एटा it is the process of gel electrophoresis which is mainly a process for separation of DNA segment that is gel electrophoresis जो जगह रे तमरो कौन यूज करा होथुला agarose gel which is extracted from the seaweed मन रखिबो agarose gel is extracted from the seaweed गला नेक्स्ट आसीबा नेक्स्ट होची agarose is chemically a agarose टा कोन बोली से पचारुची गोटे मोनोमर गोटे डाइमर गोटे पॉलीमर गोटे ओलिगोमर मोनोमर डाइमर पॉलीमर जेतेबेले सिंगल यूनिट अछि दैट इज मोनोमर तीटा हेले डाइमर
मल्टीपुल हेले पॉलीमर, ओलिगोसाइड्स थिले ओलिगोमर। तो आगार जेलटा गोटे कौन बोली पचार, मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर और ओलिगोमर कौन हबो? आगार जेल इज ए पॉलीमर, मन रखिबो। व्हाई पॉलीमर? पॉलीमर हैला मल्टीपुल यूनिट ऑफ मोनोमर, मल्टीपुल यूनिट ऑफ मोनोमर। तो तम पई या भितर गोटे क्वेश्चन, तमे मते कहिबो जदी आगारोस्टा हैला पॉलीमर ताहाले तांकर मोनोमर किए? ताहाले मोनोमर किए? कहार मोनोमर किए? आगारोज रो मोनोमर किए? जदी सेटा पॉलीमर होची से पॉलीमर टा काहाकू नेकी हेची, तार मोनोमर किए बोली तमे मते लिखिकी जणेबो। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ agarose gel? कला नेक्स्ट आस। इन agarose gel electrophoresis the DNA fragment which move furthest from loading phase। क्वेश्चंस बुझी पारलो? लोडिंग फेज रु सबुठू फर्देस्ट माने किए दूर पर्यंत जाउछि। लोडिंग फेज कोटा थिला? एठी हेउथुला लोडिंग। तो एठी डीएनए लोड कला परे, एठो डीएनए लोड कला परे को टाइप रो डीएनए टा सबुठू जल्दी जाउथुला, दूर जाय जाउथुला? देखो ऑप्शंस देखो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कि कोटा जाउथुला तांको अबाउट रे किछि इन्फॉर्मेशंस नाही कि मीडियम साइज रो कोटा जल्दी मूव होउथुला बोली कहूची? कोटा मूव होउथुला सबुठू जोटा स्मॉलेस्ट सेटा सबुठू फास्टेस्ट मूव होउथुला, दूर को मूव होउथुला। कोटा जोटा सबुठू स्मॉलेस्ट। ओके नेक्स्ट आसो। The DNA fragments separated by electrophoresis, the DNA fragments separated by electrophoresis can be visualized by staining with कौन हबो? हेमाटोटॉक्सिन, गैसिमा, ग्राम स्टेन की इथिडियम ब्रोमाइड कोटा हबो मते कुह? क्वेश्चंस बुझी पारलो तो? क्वेश्चंस बुझी पारलो? या भितरे डीएनए सेगमेंट अछि, बाकी ताकू आमे माइक्रोस्कोप रे देखिया पई ताकू आमे कोन करिवा दरकार? ए प्रोसेस कॉल्ड स्टेनिंग। व्हाट इज स्टेनिंग? तमे ओडिया भाषा रे, नॉट ओडिया, शुद्ध भाषा रे, सिंपल भाषा रे कहि परिबो कलरिंग। कलरिंग माने जेमते कि कोन देखिछो तमे? तमे जतबेले एक्सपेरिमेंट प्लस 2 रे किछि एक्सपेरिमेंट करथिबो, तम बोर्ड पूर्व किछि एक्सपेरिमेंट करथिबो, एबे जेतु जो समस्त एग्जाम सबाकू जाउछि एक्सपेरिमेंट तो समस्त किछि ना किछि करथिबो। गोटे प्रोसेस करा जाय ता भितरु स्टेनिंग बोली हैला। स्टेनिंग प्रोसेस रे कोन हुए? तमे गोटे कलर रो पानी भितरे बहुत जगह रे ब्लू कलर स्टेनिंग करथिबो, बहुत जगह रे रेड कलर रो करथिबो, ऑरेंज कलर रो भी करथिबो। गोटे रेड कलर रो पानी भितरे तमे ताकू डीप करिवो पुनी बाहर करिवो, देले कोन हे थाए? तमे कहारो देखिथिबो एग्जैक्ट तो मु मने पकई परनी, बट माइटोसिस म्यूसिस कथा जतबेले आसुची तमे ऑनियन रो सेल को नेकी करथिबो, लीफ रो स्टेम को नेकी करथिबो हैला। लीफ रो स्टेम को नेकी करथिबो माने लीफ रो स्टेम को काटिकी ताकू नेकी स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप रे देखिथिबो। एगुडा सब बेसिक एक्सपेरिमेंट एतिक तो समस्त करथिबो। तो स्टेनिंग प्रोसेस माने कोन? स्टेनिंग माने या कि तमे ताकू एथि पई कलर करूछ, माइक्रोस्कोप रे जतबेले देखुछ माइक्रोस्कोप रे सेटा तुमको क्लियरली देखा जिवो बोली, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। तो डीएनए फ्रैगमेंट कथा जतबेले कहूची कोन होची? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस रे सेटा को परफॉर्म करा गला, ताकू पुणी देखिया पई सेटी को कलर यूज करा जाय, को कलर तो नुहे को केमिकल यूज करा जाय। आउ गोटे जिंस एक्स्ट्रा मु तुमको पचारछि, तमे कहिबो केमिकल को केमिकल यूज करा जाय और सेही केमिकल टा यूज करला परे को कलर दिए, मते एति की जिंस हुआ। हेमाटोक्सिन, केंसा की ग्राम स्टेन की इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को से कलर करिया पई, स्टेन करिया पई कोनटा यूज करा जाय? डीएनए
stained by the help of ethidium bromide. Ethidium bromide will give the bright orange color. Bright orange color. kahaku? To the DNA segments. Bright orange color to the DNA segment. Okay, bright orange color. Next asiba. Next aso. DNA stained with ethidium bromide can be visualized in kaha under रे ताकू तमे देखिबो जोटाकू तमे इथिडियम ब्रोमाइड देलो जो डीएनए स्टेन को से डीएनए स्टेन टा कलर केमते हे गला से डीएनए स्टेन रा कलर हे गला ब्राइट ऑरेंज कलर तो से ब्राइट ऑरेंज कलर को देखिबा पई को लाइट दरकार बोली कहूछ विजिबल लाइट यूवी लाइट आईआर लाइट की एक्स रे कोटा हबो बोली कहूची विजिबल लाइट यूवी लाइट आईआर लाइट की एक्स रे मने रखिबो याकू सेही डीएनए को देखिया पई तुमको यूवी लाइट दबा दरकार तमे यूवी लाइट अंडर रे ही ताकू देखि परिबो मने रहिला नेक्स्ट आसो प्रोसेस बाय व्हिच ई कोलाई टेक्स ऑफ फॉरेन डीएनए क्वेश्चंस बुझी पारिलो कि नाही देखो it is an E. coli and it is the plasmid of E. coli. Here is the DNA. Okay, mention करूच plasmid DNA बुझ भल से कौन कहूँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके तुमको ये कहूँ क्वेश्चंस बुझी कि ठीक आंसर्स दियो हेलो नंदिनी हेलो हेलो तीनी ट्रांसफॉर्मेशन राइट वेरी गुड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन तो से कौन कहूँ जो प्रोसेस रे बाहर गोटे फॉरेन डीएनए टाको किए इनटेक करिवो ई कोलाई इनटेक करिवो निज भितर को नव भितर को दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बुझे गला ट्रांसफॉर्मेशन राइट नेक्स्ट आस पीवीआर 322 गोटे कौन बोली से पचारुछ पीवीआर 322 टा कौन पीवीआर 322 कौन कौन हम जल्दी जल्दी को पीवीआर 322 मने पड़ुचे स्ट्रक्चर केमती थिला BAM 2 H1 BAM H1 HIN 2 BAM H1 एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन सेगुडा सब कोठी थिला सेगुडा कोन हबो बोली पचारुछ कुह नंदिनी 4 both 2 and 3 2 रे कोन देची आर्टिफिशियल वेक्टर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हां राइट वेरी गुड both 2 and 3 काहे की ना सेटा फर्स्ट गोटे आर्टिफिशियल वेक्टर सेकंड रे होची एम्पिसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बोली हला नेक्स्ट आसो ए ट्यूमिफिकेंस deliver a specific piece of DNA in normal plant cell क्वेश्चंस बुझी पारिलो कि नाही कोन कहिला गोटे ट्यूमिफिकेंस कोन करूची गोटे स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए टाकू नॉर्मल प्लांट सेल रे दउची हला मैम कैन आई नो व्हिच लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग नंदिनी इट्स ओडिया where are you from I think you are from Odisha I think 2 ADNA na not ADNA not ADNA that is tDNA okay that is tDNA okay ट्रांसफर डीएनए देखो ट्रांसफर here is the process occurring at transfer om ji I am from Telangana state Telugu okay 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 nice nice okay okay then you understand English or Hindi right okay I am saying in Odia actually I am speaking Odia because it is an Odia channel and
Here all the children, all the students are in Odia. They only understand Odia. That's why I'm speaking Odia. Okay. I think you are comfortable in English or Hindi, na? Okay. So there is a process of deliberation occur here. Deliberation means transport. If there is occurrence in transport, then it is the tDNA. I mean transport DNA. I will English understand English only, not Hindi. Okay, okay, okay. See the question and try to answer. If there is only any wrong answer, I will help. Okay, I will correct it. If there is any issue, you can ask me. I will explain. Next, the Agrobacterium tumeficans is not a pathogen of. Agrobacterium tumeficans is not a pathogen of. Kaharo pathogen nuhe boli pocharuchi. Several algae, dicot plant, gymnosperm. Questions भलो से देखो. Question रे पचारिछि not a pathogen. Not a pathogen. Agrobacterium tumeficans टा କାହାର ନୁହେଁ, ସେଟା animals ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ. ତ ସେଟା algae ବି ନୁହେଁ କି dicot plant କି ନୁହେଁ କି gymnosperm. ଏଠି plant ଆଉ algae କଥା କହିଛି. ତ all of these. Right. All of these. Okay. Next. Competent cells are made by treating bacterial cells with sucrose, divalent cation, NaCl or cold water. କୋଉଟା ହବ କୁହ? କୋଉଟା ହବ? Competent cells ମାନେ କଣ? Suppose ये गोटे सेल, यांको पाखरे तांकर प्लाज्मिड अच्छी और डीएनए अच्छी. बुझ भल से कौन कहूची? प्लाज्मिड अच्छी और डीएनए अच्छी. तांको आमे बाहरु आउ गोटे एक्स्ट्रा डीएनए को एंटर करेबा. या भितरु एंटर करेबा. ओके. तो कौन आमे करिबा? कहा सहित ट्रीट करिबा? निक्सी 2 divalent cation, right? Very good. Divalent cation form रे divalent cation देले एठी सब pores create हे जिवो. हला pores create हे जिवो, membrane टा पतला हे जिवो. pores create हे गले कोन हबो? से इजीली एंटर करि परिबो डीएनए. हला बुझी होला कि नहीं? ए मिनिट. हां, नेक्स्ट आसो. Method in which foreign DNA is directly injected in the nucleus. Foreign DNA directly injected in the nucleus. को हेल्प रे, कहा हेल्प रे foreign DNA टाकू न्यूक्लियस भितरे डायरेक्ट इंजेक्ट करा ही परिबो. माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, ट्रांसफॉर्मेशंस की नॉन ऑफ दीज. कोउटा हबो? माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, ट्रांसफॉर्मेशंस की नॉन ऑफ दीज. Nixie 4 no, Nandini, not 4. By the help of micro injection. Okay, 1 right. By the help of micro injection, you can directly inject a foreign DNA into a nucleus. Okay. Next, which of the following are the method of foreign gene transfer in host cell? Questions I think बुझी पारछो तमे. कौन कहिला? को मेथड रे हैला गोटे फॉरेन जीन टाकू आमे गोटे होस्ट सेल भीतर को ट्रांसफर करि पारि. फॉरेन जीन को होस्ट सेल भीतर को ट्रांसफर करि परिबा. बायोलिस्टिक जीन गन, पैथोजेन वेक्टर की ऑल ऑफ दिस. बायोलिस्टिक जीन गन, डिसआर्म्ड पैथोजेन वेक्टर की ऑल ऑफ दिस. व्हिच वन? जल्दी आंसर करो. क्विक. Foreign gene will be transferred to a host cell by the help of what? Nandini 2. Only gene gone. We can't use biologistic method or pathogen vector. We only use gene gone method. That's all. देखो आमे बायोलिस्टिक भी यूज करि परिबा, जीन गन भी यूज करि परिबा, पैथोजेन वेक्टर भी यूज करि परिबा. वेक्टर. Okay. तो the answer will be all of these. Okay. Next. An example of disarmed pathogen vector is dash. Disarmed.
पैथोजेन वेक्टर क्वेश्चंस भलो से बुझो देन मते कहिबो disarmed pathogen vector is dash PVR 322 PUC modified TI plasmid or yak disarmed pathogen vector which one will be the disarmed pathogen vector? You know about the PBR 322. Nixie, PBR 322 is the artificial plasmid. Okay, not disarmed pathogen vector. Nandini, not PBR 322. आमे एबे ही गोटे क्वेश्चंस करी के आसिले. We just discussed about PBR 322. That is an artificial. What is the question? Artificial vector. Then why you were asking about PBR 322, not PBR 322? Which one? Which one? Will be. It will be modified TI plasmid. Modified TI plasmid. Okay, clear? Clear? Nixie, clear? Next answer. Cell wall of bacteria can be lysed by. What is the meaning of lysed? Lysed means the word breakdown. Breakdown. The cell wall of bacteria can be lysed by lysozyme, cellulase, chitinase, ligninase. कोटा हबो? कोटा हबो? Bacteria cell wall. Bacteria cell wall can be break down by the help of. Simply is asking. Cell wall of bacteria can be break down by the help of lysozyme, cellulase, chitinase, or lignase. Which one? Which one? Which one? First, you have to think about the bacterial cell wall is made up of. The bacterial cell wall is made up of what? Nandini, not chitinase. When it comes to fungi, the cell wall is made up of chitin, then it will be chitinase. But not in case of bacteria. Bacteria pai nuhe. That will be the lysozyme. Okay. Nixie, right? That will be the lysozyme. Okay. Next. Plant cell wall can be degraded by the treatment of. Plant cell wall can be degraded by the help of lysozyme, cellulase, chitinase, lignase. देखो एठी पचारथिले बैक्टीरिया सेल वॉल एठी पचारिछि प्लांट रो सेल वॉल so first we have to distinguish about plant cell wall and bacterial cell wall. Plant cell wall is made up of what? Plant cell wall is made up of what? Cellulose. Getting it or not? Cellulose. जदि cellulose तो cellulose को break down करिया पई हमें कोन दबा? Cellulase. Okay, clear? Cellulose. Next 2, Nandini 2, right? Cellulase. Next, RNA and protein portions are removed during DNA isolated by treating with. कहा सहित ट्रीट करिया कथा कहूची RNA and protein portion हैला RNA protein portion. For RNA it will be RNH. For the protein portion it will be protease. Okay, clear? 3, right. RNase and protease. Okay, RNase and protease. Okay, next. Isolated and purified DNA can be precipitated by adding chilled NSA, chilled sucrose, chilled ethanol, chilled glucose. Which one? Isolated and purified DNA जहा द्वारा कौन हबो गोटे DNA भितरे DNA segment अछंती
प्रोटीन पार्टिकल्स अछंती लिपिड अछंती आमे ता भितरे कोन दबा जोटा कि प्रेसिपिटेड हे जिवो माने डीएनए रो सेगमेंट आ डिफरेंट सेगमेंट उडा प्रेसिपिटेड हे जिवो फील्ड NaCl सुक्रोज इथानॉल और ग्लूकोज नो निक्सी नॉट NaCl you have to give ठंडी दारू not sucrose you have to give wine चिल्ड इथानॉल ठंडी दारू देना है तुम्हें वहां पे then it will be precipitated means DNA will be separated DNA will be separated okay done मने रहिला कि नहीं क्लियर हैला कि नहीं नेक्स्ट आस amplification of gene of interest is done using gel electrophoresis chromatography PCR or gene sequencing which one कुह जल्दी कुह कौन कहूची देख जीन एम्प्लीफिकेशन कथा कहूची जीन एम्प्लीफिकेशन कथा कहूची कहा द्वारा हबो एम्प्लीफिकेशन मीन्स multiplications here is one gene what is gene gene is the segment of DNA of not gene is the segment of DNA देखो गोटे जिनस हला गोटे क्वेश्चन रु गोटे मिनिट सॉरी सॉरी कौन कहूली मु पीसीआर नंदिनी पीसीआर राइट राइट एम्प्लीफिकेशन कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर गोटे जिनस हला तमे एठी गोटे क्वेश्चन मार्क करि परथुबो गोटे जिनस गोटे क्वेश्चन भितरु तमरो केतेडा क्वेश्चंस आसी पाउछ हला तमे जदी फंडा क्लियर ना हो हला मु एथि पई ए जिनसडा कहूची बहु जण मते कमेंट सेक्शन रे तमे पचारथिला हम एति क्वेश्चंस जो करूचंती हम एति क्वेश्चंस करले हमरो क्लियर हे जिवो कि नाही बुझुछ कि नाही कोन कहूची तमे बहु जण पचारथिला हम जेति क्वेश्चंस करूचंती हम कल्ले क्लियर हे जिवो तो हां तुमको मु जेति क्वेश्चंस करूची नो डाउट सेगुडा इंपोर्टेंट बाकी तमे इठु देखि परछो तो जो क्वेश्चन टा मु करिली ता भितर हुए ता दि तीनटा क्वेश्चंस बाहर थु जोडा कि तुमको आसनथु कि मु तुमको कहिनी सेटा केमती जानिबो सेटा तुमको निजोको करियार अछि जदि सेति के इंटरेस्ट निजो पाखरे नाही तो मु इठी 100 टा जागा रे 1000 टा क्वेश्चन साणी कि जदि गोटे चैप्टर गाई भी देबी तापरे भी किछि भी इफेक्ट पड़िबोनी हला काहे के कहूची काहे के ना बहुत जण पछारुथुलो कथा हला एटा हला नेक्स्ट आसो the primer used during annealing step of PCR क्वेश्चंस कौन कहला बुझी पारलो प्राइमर यूज ड्यूरिंग को प्राइमर टा यूज करा जाए हाँ नंदिनी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्राइमर इज यूज्ड ड्यूरिंग एनीलिंग पीसीआर रो तीनटा स्टेप मने पडुची दैट इज डीएई कौन एटा 3 steps of PCR what is DAE Nixie why for small tRNA molecules कहेंगी देखो denaturation annealing extension हला denaturation annealing extension कथा कहली से कहूची ए जो लास्ट सॉरी मिडिल स्टेप एनीलिंग पई एठी कोन दरकार tRNA molecules no not tRNA molecules those are chemically synthesized oligonucleotide मने रखिबो आकु chemically synthesized oligonucleotide क्लियर कि नहीं नेक्स्ट आसो
वीडियो बफरिंग होची वेट नहीं रे वीडियो तो बफरिंग नो नॉट बफरिंग डू वन थिंग वेट नाउ क्लियर नंदिनी नाउ वीडियो क्लियर और नॉट क्लियर ना नो बफरिंग ओके गुड कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज और ताको कौन कुहा होची टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम काहाठू मिली थाई बोली कहूची थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टा काहाठू मिली थाई from where we get the tag polymerase from E. coli from S. typhimurium from Thermus aquaticus or pneumoniae which one the thermostable DNA polymerase we get from what from where from whom to S. typhimurium no listen a trick to remember sorry a trick to remember thermostable the word thermo here is the word thermo okay then it is easy to remember thermostable thermos aquaticus mone rahila the answer will be the thermos aquaticus thermostable pneumonia nahi pneumonia nuhe not as pneumonia that will be the thermos aquaticus okay thermostable देखो one feature of thermos aquaticus तुमको कहूची सेटा बहुत हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव करि पारे ओके नेक्स्ट डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक लायोफिलिक की नॉन ऑफ द अबव हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक लायोफिलिक की नॉन ऑफ द अबव which one mnemonic हाँ mnemonic it's a trick for you to remember easily okay DNA is a hydrophilic molecule hydrophobic lyophilic or none of the above which one right very good it is a hydrophilic molecule okay it is a hydrophilic molecule next in continuous culture cells are maintained in continuous culture cells are maintained in lag phase log phase stationary phase or none of the above which one कंटिन्यूअस कल्चर भितरे सेल को जितने मेंटेन करा हबो को कल्चर रे लैग लॉग स्टेशनरी और नॉन ऑफ दिस व्हिच वन लैग लॉग स्टेशनरी और नॉन ऑफ दिस कोन हबो कोटा हबो व्हिच वन नॉट इन स्टेशनरी फेज नंदिनी नॉट स्टेशनरी फेज निक्सी नो नॉट स्टेशनरी फेज कंटिन्यूअस कल्चर कथा कहूची कंटिन्यूअस कल्चर रे सेल टा सब बेले लॉग फेज रे ही मेंटेन होची यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द लॉग फेज मने पडुची लैग फेज लॉग फेज स्टेशनरी फेज नॉन ऑफ दिस हला here is the lag log stationary declining next for the transfer of foreign DNA cells are bombarded with high velocity of microparticles coated with DNA in a method as questions बुझी पारलो for the transfer of foreign DNA cells are bombarded with high velocity of microparticles कहा सहित कोटेड हेइथिबो with DNA से मेथड टाकू कोन कुहा होउची बोली से पचरुची व्हाट इज द मेथड कॉल्ड बायोलिस्टिक जीन गन
जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस की both 1 and 2. Which one? Which one? को method? Next 3 जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस. Hey, why जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस? हमें एबे ही कहि के आसिले जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस रे हमें डीएनए रो सेगमेंट को तांको साइज अनुसार हमें तांको सेपरेट करूछु. देन व्हाई जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस? देखो এই जो प्रोसेस टा एठी मेंशन करिने ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए to bombard with a high velocity microparticle, it only occur in case of gene gone. You have to remember it only occurs in the case of gene gone. Okay, clear? Clear or not? Next, in gene gone method, high velocity microparticles made up of gold, tungsten, aluminum or both 1 and 2. Gold, tungsten, aluminum or both 1 and 2. Which one? Which one? Nixie, right. Why the question mark? Huh? Right. There is both 1 and 2. माने से टाइम में गोल्ड भी यूज करि परिबा और टंगस्टन भी यूज करि परिबा. 23 question. 23 question. No, 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 no. Not biologistic. It will be the gene gone only. Okay. Next is not biologistic. Only in the gene gone method, we have to use the foreign DNA to bombard with high velocity microparticles. Okay. Next. Which one is a vectorless gene transfer method? Which one is the vectorless gene transfer method? Vectorless. What is vector? Vector is that vector which help in transfer. There are some examples like E. coli. Okay. So, which one is the vectorless gene transfer method? Which one is the vectorless gene transfer method? Which one? Microinjection, biologistic, gene gone or all of these? Microinjection, biologistic, gene gone or all of these? Which one is the vectorless gene transfer method? Which one? Where is the answer? Where is the answer? Where is? Why your answer is not coming, huh? 3. Vectorless माने जो जगह कहार हेल्प आमे नौ डायरेक्ट डीएनए को नौचु इनसर्ट कर दउचु आ गोटे भितरे तो सेटा माइक्रो इंजेक्शन भी हेई पारे बायोलिस्टिक भी हेई पारे और जीन गन भी हेई पारे so that will be the all of these. Okay, next aso presence of more than one recognition site in the vector DNA. Presence of more than one recognition site in the vector DNA is called कौन हबो बोली पचारुछि कौन हबो देखो. It is beneficial process of gene cloning because more than one attachment sites are available or not. Complement the gene cloning process because so many fragments are generated. देखो complicates the gene cloning process. Why there is complicated process? Because there is formations of so many fragments. Okay, there is formations of so many fragments. Next, we know that PCR replication of DNA is repeated many times. The segment of DNA can be amplified to approximately billion times. That is 1 billion copies are made of 30 seconds. Now, if we make 16 billion of copy, then how many cycles are required? Questions तमे बुझी पारिलो कि नहीं? Questions कौन कहिला बुझी पारलो कि नहीं? देखो मु तुमको कहिबे प्रोसेस आंसर तमे मते जणैबो कमेंट सेक्शन रे.
we know that PCR replication रे कौन होची DNA टा repeated many times तो segment of DNA can be amplified approximately billion time 1 billion copy are made in 30 cycle हैला 30 टा cycle रे गोटे बिलियन कॉपी प्रोड्यूस होची हैला now if we make 60 billion copy हैला एठी मैं कोन करिछि 16 बिलियन कॉपी प्रोड्यूस करेबार अछि तो हमकु एठी केतेटा साइकिल दरकार क्वेश्चंस बुझी पारलो तमे यार आंसर बाहर करके मते कमेंट सेक्शन रे जाओ जदी न हबो मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे कहिबी जदी न हबो सेम क्वेश्चन मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे रिपीट करेबी बट फर्स्ट यू हैव टू आंसर ओके क्वेश्चंस मु तुमको बुझाई देली तुमको बाहर करियार छी बस साइकिल रे नंबर ओके नेक्स्ट a gene whose expression helps to identify transport cell is known as what known as selectable marker direct question सेटा a gene whose expression helps to identify transport cell is known as selectable marker okay next question which one of the following is responsible for controlling of copy number of the linked DNA पाई कोटा कॉपी करिया दरकार बोली हैला को जगह रे स्टार्ट होउची तमरो से मेनली पचारुची ए जगह रे तमरो जो रेस्पोंसिबल कोटा हला रेस्पोंसिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर को रेस्पोंसिबल कंट्रोल करिया पई किए रेस्पोंसिबल किए ताकू कंट्रोल करैबो बोली पचारुछु किए कंट्रोल करैबो that will be the what is origin of replication or ori okay next question को आसो which of the following included a compartment of downstreaming process simply पचारछि गोटे downstreaming process कोन बोली downstreaming process रे कोन हुए downstreaming process कोन downstreaming process is a process of separation purification and preservation all of the above separation भी होउची purification होउची preservation भी होउची तो the answer will be the all of the above okay okay हाँ आजी पाई तम पाखरे एतिकी ही क्वेश्चंस थिला जदी किछि डाउट रही जाईची किछि इशू रही जाईची तमे मते कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो सेकंड थिंग हैला इठी तम पाखरे देईची टेलीग्राम चैनल एपटे तमरो अछि यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप तमे जाई कि स्कैन करिकि जॉइन हे जिवो आ जदी किछि इशू रहउची कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबो टेलीग्राम चैनल जॉइन हला परे या व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हला परे तमे सेठी भी तमे मेसेज करि परिबो जदी किछि इशू रहउची को क्वेश्चंस को नेकी को टॉपिक को नेकी तमे जणाई परिबो ठीक अछि आ जदी किछि प्रॉब्लम रहउची को टॉपिक रिलेटेड बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोटा कोन पढिबो जानि होनी तार एकेडमी जदी किछि इशू होउची तमे सेठी मेसेज करिकि डायरेक्ट कथा ओके तो आजि पई एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे भलो से पढ़ भलो से प्रिपेयर हो तुम प्रिपरेशंस को स्पीड अप करो